In this video, we are going to talk about the armamentarium used in oral and maxillofacial surgery. We will discuss these under following headings. The first one is the instruments used for picking up of sterile instruments, which includes cheatal forceps. Cheatal forceps is a long angulated instrument that is used for picking up sterile instruments from tray or linen or from the drum. Cheatal forceps are stored in a container containing antiseptic solution like Savlon. The solution must be changed every day so as to maintain the sterility of the cheatal forceps. Next we have are the instruments that are used for preparing the surgical field. In this first we have is swab holder. Swab holder is an instrument with long blades expanded at the ends forming an oblong tip. The blades have a central fenestration and transverse serrations. These fenestrations and transverse serrations helps the swab holder to hold the swab in position during its use. The uses of swab holder are to hold a swab and clean the area of operation. Number second is to swab the throat when there are profuse secretions in an unconscious patient or patients under general anesthesia. Number third is to press the tonsillar bed against hemorrhage. Number fourth is to hold the tongue and give anterior traction, thus preventing the tongue fall and airway obstruction in an unconscious patient. मतलब 4 यूजेस हैं. पहला स्वैब करना और क्लीन करना एरिया ऑफ ऑपरेशन को. दूसरा अनकॉन्शियस पेशेंट में जो उसकी सिक्रेशंस निकल रही है, प्रोफ्यूज सिक्रेशन निकल रही है, उनको साफ करना. तीसरा टॉन्सिलर बेड को दबा के रखना ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो. और चौथा टंग को होल्ड करके रखना ताकि टंग का बैकफॉल प्रिवेंट किया जा सके और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से बचाया जा सके पेशेंट को. नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर होल्डिंग द ड्रेप्स विच इंक्लूड्स टॉवल क्लिप्स. 2 तरह के टॉवल क्लिप्स होते हैं हमारे पास. पहला है द पिंचटर टाइप जिसको कि फोरसेप्स टाइप भी बोलते हैं और दूसरा है बैक हाउस टाइप ऑफ टॉवल क्लिप. दोनों में डिफरेंस क्या है कि बैक हाउस टाइप ऑफ टॉवल क्लिप के पास स्प्रिंग जॉइंट होता है और जो फोरसेप्स टाइप ऑफ टॉवल क्लिप है उसके पास बॉक्स जॉइंट होता है. ये जो टॉवल क्लिप है इस इंस्ट्रूमेंट के जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और एक दूसरे की तरफ कर्व्ड होते हैं जिससे कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए. इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को हम ड्रेपिंग शीट्स के कॉर्नर्स को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन. सेकेंड इज इससे हम टंग को भी होल्ड कर सकते हैं. तीसरी चीज़ आती है to stabilize the suction tubes, motor cables and other fiber optic instrument cables to the drapes. यानी ड्रेप के साथ सक्शन ट्यूब, मोटर केबल्स और बाकी फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट केबल्स उन सबको स्टेबलाइज करा जा सके ताकि सर्जरी के दौरान जो थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है उसमें ये सक्शन ट्यूब्स वगैरह अपनी जगह पे स्टेबल रहे. नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर इंसाइजिंग द टिश्यूज. इसमें पहला हमारे पास आता है स्कैल्पल. द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर मेकिंग एन इंसिजन इज कॉल्ड एज स्कैल्पल. स्कैल्पल के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लेड एंड ब्लेड हैंडल. अब यहाँ पर हम बार्ड पाकर ब्लेड हैंडल के बारे में बात करेंगे जिसे हम बीपी ब्लेड हैंडल भी बोलते हैं. बीपी ब्लेड हैंडल्स डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं एंड द मोस्ट कॉमनली यूज हैंडल इन ओरल सर्जरी इज नंबर 3. द हैंडल हैज अ रिसीविंग स्लॉट फॉर द ब्लेड. While fitting the blade to the blade handle, it is held with the help of needle holder or an artery forceps to prevent injury to the operator. यहाँ कहने की कोशिश हो रही है कि जो ब्लेड है उसे हम आर्टरी फोर्सेप या नीडल होल्डर से पकड़ के ब्लेड हैंडल के ऊपर प्लेस करते हैं ताकि ऑपरेटर को किसी भी तरह की इंजरी ना हो. जो ब्लेड है उसे बीपी हैंडल के स्लॉट में पुश करा जाता है ताकि वो हैंडल में फिट हो जाए. अब यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो स्कैल्पल है उसे हमेशा पेन ग्रास्प में पकड़ना चाहिए ताकि वो मैक्सिमम कंट्रोल ऑफर करे टू द ऑपरेटर. Now we have different type of blades. Number 10 blade is used for making skin incision. Number 11 blade is used for making stab incisions. For example, to drain an abscess. Abscess को drain करने के लिए हम number 11 blade use करते हैं. Number 12 blade is used for mucogingival procedures. And number 15 blade is used for intraoral surgery. Now the next instrument which is used for incising the tissues is dissecting scissors. As the name suggests, dissecting scissors are used to perform soft tissue dissection in deeper layers. These scissors have a blunt nose for undermining the tissues. यानी कि टिश्यूज के नीचे जाने के लिए इनके पास ब्लंट नोज होता है ताकि फ्रंट टिप जो है वो टिश्यू को कोई डैमेज ना करे. और साइड कटिंग एजेस होती हैं फॉर कटिंग ऑफ द टिश्यूज. नाउ नेक्स्ट वी हैव आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर रिट्रैक्टिंग द टिश्यूज. रिट्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला हमारे पास आता है लैंगनबैक्स रिट्रैक्टर. लैंगनबैक रिट्रैक्टर के पास एक लॉन्ग हैंडल होता है एंड एन एल शेप्ड ब्लेड. दिस रिट्रैक्टर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ओरल सर्जरी. It is available in different sizes and different blade width. जो लैंगनबैक रिट्रैक्टर है वो सिंगल एंडेड भी हो सकता है, डबल एंडेड भी हो सकता है. It is used to retract soft tissues, incision edges and to allow view into deeper structures. Next is C-shaped retractor. C-shaped retractor also has a long handle, but the blade is C-shaped. It is most commonly used in abdominal surgeries. Next is Austin's retractor. Austin's retractor एक short right angle retractor है that is used for retracting cheek,
tongue and mucoperiosteal flaps. Next we have is Ovigazer's ramus retractor. जो Ovigazer's ramus retractor है, that is similar to Langenbach's retractor, except that the edge of the retracting blade is forked. कांटे की तरह होती है इसकी edge, जैसे कि V-shaped notch बन जाती है, so as to engage the anterior border of the ramus of the mandible and thus aiding in good tissue retraction. ये बेसिकली टिश्यूज को एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ramus ऑफ मैंडिबल तक एंगेज कर देता है, जिससे कि गुड टिश्यू रिट्रैक्शन दिखाई देती है. यूजेस टू रिट्रैक्ट द सॉफ्ट टिश्यूज अलोंग द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ramus ऑफ मैंडिबल ड्यूरिंग सैजिटल स्प्लिट or ramus osteotomy. Second is to retract the tissues from the anterior border of ramus during coronoidectomy procedures. Coronoidectomy क्या होती है? Coronoid process की surgical removal को coronoidectomy बोलते हैं. Next we have is condyle retractors. Condyle retractors are specialized retractors that have appearance similar to tongue depressor, but they are narrower and the tip of the blade has C-shaped hook that is slipped under the ankylosed mass to retract and protect the medial soft tissues during release of ankylosis. Next is Weider's retractor. Weider's retractor सिंपल है, ये हार्ट शेप का रिट्रैक्टर होता है जिसके एक साइड पे सेरेशंस होती हैं. जो सेरेशंस है वो टंग को एंगेज कर लेती हैं और उसे फर्मली रिट्रैक्ट कर सकती हैं मीडियली एंड एंटीरियरली. नेक्स्ट वी हैव इज कैट पॉज रिट्रैक्टर. जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिजेंबल करता है कैट के पॉ को, बिल्ली के पंजे को रिजेंबल करता है. द ब्लेड हैज प्रॉन्ग्स दैट आर कर्व्ड एट द टिप. कैट पॉ रिट्रैक्टर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट excessive force during retraction with cat paws retractor may lead to perforation or tearing of the flap. Next we have is the tongue depressor. Tongue depressor is an L-shaped instrument with a broad smooth blade for depressing or retracting the tongue. Uses of tongue depressor are to depress the tongue for visualization of tonsils and pharyngeal wall during inspection. Second is to depress the tongue during endotracheal intubation and extubation. Third is to depress the tongue and move it anteriorly to check for airway obstruction and to prevent tongue fall during surgery of an unconscious patient. Fourth is to retract the tongue during surgical procedures in oral cavity. Fifth is to retract the cheek. Next we have is Selden's retractor. Selden's retractor is similar to periosteal elevator. मगर यहाँ पे एक डिफरेंस क्या होता है, लीडिंग एज जो है वो शार्प नहीं होती, इसीलिए इट इज ओनली यूज फॉर रिट्रैक्टिंग सॉफ्ट टिश्यूज एंड नॉट फॉर एलिवेटिंग द म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप. Next we will study about the instruments used for reflecting the mucoperiosteal flap. सबसे common instrument इसमें जो use होता है that is Mohs probe. Mohs probe is thin, flat instrument that has small working tip at right angles to the handle and the tip is narrow and sharp. Now the use of Mohs probe is to elevate the attached gingiva around the tooth prior to extraction. Next we have is periosteal elevators. पूरा नाम है Molt number 9 mucoperiosteal elevator. As the name suggests, these instruments are used for reflecting the mucoperiosteum. Most of the periosteal elevators have broad end on one side and a pointed or triangular end on the other side. Uses क्या होते हैं Molt number 9 mucoperiosteal elevator के? The pointed end is used to release the interdental papillae. The broad end is used for elevating the mucoperiosteal flap away from the bone. Third is the broad end can also be used as a soft tissue retractor. Now we will study about the methods of reflecting the periosteum. First is prying motion. The pointed end can be used in prying motion to elevate the soft tissue. For example, reflecting the interdental papillae. Number second is push stroke. Push stroke is given with the broad end of the mucoperiosteal elevator and is most efficient stroke to reflect the periosteum away from the bone. Third is the pull stroke. Pull stroke is also called as scrape stroke and is most likely the stroke that tends to tear the periosteum. यानी pull stroke जो है वो सबसे ज़्यादा tendency रखता है to tear the periosteum. Next we have is cleft palate respiratory. Cleft palate respiratory is broad flat handled elevator that is specially used to elevate the palatal mucoperiosteum while mobilizing the flaps for cleft palate repair.